Welcome to this hangout organized by Youth Ki Awaaz and Girls Count. It's in a series of hangouts being organized by Youth Ki Awaaz and taking up different issues. This particular hangout, we're going to talk about the issue of the declining child sex ratio, particularly the ratio of girls vis-a-vis boys, 1,000 boys in the age group of 0 to 6. We have a whole set of distinguished guests with us who I'd like to introduce. My name is Manak, and I work with an organization called Girls Count. It's a coalition of a lot of different organizations and individuals who are working on the issue of the declining child sex ratio in different ways. तुम्ही त्यांचं प्रशिक्षण कशासाठी थांबवलंय? तुम्ही तुमची कामं का थांबवता? एका मिनिटात नका घालू. पहिलंच ते बघ काय कसं यायचं ते बघ, त्याचं बोलणारे ऐकू कसं जाणार त्यांना? Sorry for this interruption. त्याच्यात आवाज काय कळत असतं तुम्हाला, तर सगळं शिकून घेता सगळं अर्धवटच असतं. So for today's discussion, we have with us Dr. Neelam Singh, who's a gynecologist by profession and a social entrepreneur and activist by profession. She is an expert in the field of gender and has rigorously worked on issues of the declining child sex ratio and effective implementation of the PC-PNDT Act in the country for the last over 20 years. She's also received various awards for her work on these issues, and she's a teacher, judicial trainer, activist, doctor, and an active advocate for the rights of women and girls. So welcome, Dr. Singh. Really glad to have you as part of this hangout. Thank you. We also have Ms. Preeti Sudan, Additional Secretary, Ministry of Women and Child Development. Ms. Sudan is an IAS officer of the 1983 batch, and before this particular portfolio, she has worked as the Joint Secretary, Ministry of Defense, looking after acquisition issues, and has a distinguished track record of serving in finance and planning, disaster management, tourism, and agriculture. She was also consultant in the World Bank and is an MPhil in economics and postgraduate in social policy and planning from London School of Economics. Preeti, welcome to the hangout, and thank you very much for taking out time to be here, even though you can be here for a short time. Thank you very much for joining us. We also have with us Ms. Varsha Deshpande, Secretary of the Mahila Vikas Mandal. Varsha ji is a lawyer by education and has been actively working on issues of declining child sex ratio and the implementation of the PNDT Act for over a decade. And she has many years of experience of working on ground on these issues, especially about the legal landscape vis-a-vis sex selection and the declining child sex ratio. So welcome, Varsha ji. And Varsha ji and Neelam ji are both also part of the National Inspection and Monitoring Committee by the Ministry of Health and Family Welfare and State Inspection by Ministry of Health and Family Welfare that is looking at this issue and closely monitoring the developments. The fourth guest that we have today is Ms. Aarti Dhar, who is a journalist with The Hindu for the last 25 years. She's a media person who's been reporting on the social sector with a primary focus on public health. And her work on the widows of Vrindavan has moved the Supreme Court to take notice of the immense discrimination they have to face in their daily lives. She's also worked on the issue of child marriages in Chhattisgarh. And her work in 2001 prompted the National Human Rights Commission to issue strict guidelines against this practice. So welcome, Aarti ji, and we really appreciate the wealth of information and knowledge that you're bringing to this particular hangout. Really glad to have you part of it. To start off, Neelam ji, would just like to invite you to share with everybody who's watching a little bit of the landscape कि अभी क्या situation है ये declining child sex ratio की जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या context रहा है पिछले कुछ सालों में और अभी what is the situation that we are looking at in India? I think if we look into the issue, the declining sex ratio in India has been last 4 decades we have been having this decline, and I think being a patriarchal country, when these technologies for imaging techniques they came in India, say around 1975 and onwards, subsequent censuses have been given us a very glaring picture, and every passing census the sex ratio are declining. And this decline is being very serious concern in the past census 2011, when the sex ratios for the first time they started declining in the rural pockets of India. And if I just compare, the decline in the rural pockets 11 times more as compared to the urban India, and that is something which is very worrying.
So I think the use of technology to exploit the mindset of patriarch in the country is a serious issue. And now we are seeing the social consequences of the issue. So in this context, this becomes very, very important because we are the second country in the world where the sex ratios have skewed to the tune that now we are seriously worried about the issue. नहीं जिस नंबर से वो करने वाले उनके ही मोबाइल पे हमने कनेक्ट किया एक्चुअली. हेलो. Yeah, Manak. अच्छा 5 मिनट के बाद. Sorry for that bit of interruption in the middle. We're trying to also battle some technical difficulties in the middle of the conversation. Sorry, Neelamji. There was a call and we were trying to manage some technical bits. But thank you very much for giving us that beginning. PPG would like to also now, because you also have a little less time to be with us as part of this hangout, would like to invite you in to also share about how the government has looked at this whole issue and what all important, significant things have been taken into account और आगे बढ़ने के लिए क्या अभी. So जैसे कि डॉक्टर नीलम ने बताया कि ये डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स to every 1000 boys. तो अगर हम ये देखें तो ये रेशियो 1961 से एवरी सेंसस हम इसको इवेलुएट करते हैं, इट हैज बीन फॉलिंग एंड इट हैज बीन फॉलिंग अनअबेटेड. और अगर हम देखें जैसे कि 1991 से, I'd like to show you this map. ये आप मैप देखिए. अगर हम 1991 सेंसस में देखें तो ये डिक्लाइन था एडवर्स चाइल्ड सेक्स रेशियो, सिर्फ ये पंजाब हरियाणा, लाल देखिए आप, लाल रंग देखिए, ये लाल रंग नॉर्थ में लिमिटेड था. और ये जब डार्क ग्रीन आप जो देख रहे हैं, ये डार्क ग्रीन इज द फेवरेबल चाइल्ड सेक्स रेशियो. नाउ व्हाट हैपेंड इन 2001 में ये लाल रंग बढ़ा. It spread to the western part of the country, and now see 2011 it is spreading throughout the country. And if you see the dark green, that is the that has just vanished. So this is like an epidemic. The declining child sex ratio has become an epidemic. And as Dr. Neelam was saying, कि पहले हम इसको एक अर्बन फिनोमिना मानते थे कि जहाँ पे सोनोग्राफी मशीन्स हैं या जहाँ पे टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट हुई है, it is there, but now it is spreading in the areas also. इसमें there are lots of causes. Misuse of technology is a symptom, but the causes lie in our mindsets. हमारी जो सोच है, हमारा जो सन प्रेफरेंस है, हमारा जो पैट्रियार्कियल सेटअप है, हम जो सोचते हैं कि मतलब हमारा तो उधार ही नहीं होगा अगर हमारी लड़कों ने हमारी चिता में आग नहीं लगाई, मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी 2 लड़कियां हैं. So you know like that, I mean it's the whole way we think, and we think women as a burden, as girls as a burden. मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि have you ever tried within your family, just look into your family, just look into your neighborhood and do a survey of how many girls looked after their old parents and how many sons looked after their old parents. I assure you that the girls will outnumber in terms of caring, loving and being affectionate towards their parents. So it is, if we have to tackle declining child sex ratio, there are 2 things. One is, of course, as Dr. Neelam rightly pointed out, it is the technology, you know, ensuring that there is no misuse of the effective implementation of the PCPNET Act. Next is the addressing the mindsets. Now, government through its scheme of Beti Bachao, Beti Padhao
we are trying, ये हमारा logo, we are trying to launch I would say it's a mission. This is our logo. We want to start our mission wherein we want to address mindsets and also ensure that the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of HRD together we want to address this declining child sex ratio, but it cannot be done without making every Indian a partner in this effort. So from our side we have identified, do you think I should stop or am I going too much? I mean, no, please continue, Ms. Subhana. So I'm just trying to say that the problem is enormous. It's like an epidemic. We are launching a scheme called Beti Bachao, Beti Padhao, which the Prime Minister will be in January launching it officially. Also, we've been doing a lot of preparatory work in this regard. We have a YouTube channel, a dedicated YouTube channel, which I request all of you to see. If you Google on Beti Bachao, Beti Padhao WCD, you will see that channel. There are a lot of about 40 videos which we have uploaded on it. So we have, there are 244 actually districts which are below the national average of 918. I showed you those red maps. Now we have selected 100 districts for convergent action by Ministry of HRD, WCD and Ministry of Health. So, as I said, our endeavor will be to create actually champions at the local level, so that we start talking about the problem at the village, district, and at the block level. We will also, the Ministry of Health and Family Welfare is trying to put into place systems and mechanisms for strengthening and the monitoring of the PCPNDT Act. Two important things here. If we are able to register in the first trimester itself early and then register the births, I think we would have addressed the two ends of the spectrum. So that is also one thing that we want. We want Gudda Guddi boards in every village, in every office, in every public place, so that the villagers know what's happening in their villages. Sometimes people don't know. I mean, frankly, that the problem is getting so enormous. The girls are missing. We are killing our girls. So addressing mindsets is a huge task, and I seek the cooperation of each and all of you. I'm sorry I need to leave at 4:30, but I'm present for till that time. Thank you. Thank you, Preeti ji. Varsha ji, actually would like to invite you to come in now. कि अभी प्रीति जी ने जैसे बोला कि there is a campaign, a massive campaign and a scheme and various things that are being launched by the government. आप दोनों ends पे काम करते रही हैं, कुछ government के साथ में भी, and you've been involved in a lot of legal activism, looking at the roles of doctors and the PCPNDT Act. So wanted to invite you to maybe also share about what are the ways in which some of these partnerships with the government have worked or can work. I think Varsha ji has been okay. So I think we've lost. उन्होंने mute किया हुआ है. I think you can try to ask her, but how do you ask her to unmute it? She is now gone out of the hangout. I think there's some technical problem at her end that is being. Okay. So anyway, okay. So we'll move to Aarti ji. अगर आप फिर इस point पे, if you can come into the conversation, because you've been writing about these issues. जैसे कि प्रीति जी कह रही थी, there is a twin problem. One is the technology and addressing the technology, and the other is the mindset. And that also brings us to a whole range of issues that brings us to a whole range of issues that are connected with violence against women and gender-based violence that you've been writing about. So if you could just tell us a little bit about, you know, the challenges of actually raising these issues within the media or in the public discourse.
कुणाशी बोलतोय बोट कशाला घालतोय तुला कळत नाहीये का Oh, we can't hear. Okay, there is किससे बात हो रही है Aarti ji, I think cannot hear us or something. I आरती think. से ओके लेकिन शायद वो सुन नहीं पा रही हैं because रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आरती जी. We can hear, but we can't hear her. या मे बी वर्षा जी आप हैं कॉन्वर्सेशन में. मैं हूँ अच्छा वर्षा जी, फिर मैं पहले जो आपको पूछा था सवाल जब आप निकल गए थे इस कॉन्वर्सेशन से, ये कि जैसे प्रीति जी अभी बात कर रही थी ऑफ पार्टनरिंग विद द डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. उन्होंने स्कीम के बारे में भी बात की और उन्होंने बोला कि इसके लिए पार्टनर करने की जरूरत है अक्रॉस द बोर्ड. तो आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑन वर्किंग from the route of the legal activism and also working with the government, with civil society in all ways. So thoda sa if you could share about the experiences of have any of these partnerships worked, or what are the things that we need to take into account agar hum keh rahe hain ki ek government and civil society partnership हमको build करनी है इस मुद्दे पे. सबसे पहला मेरा मानना तो ये है कि दलित और शोषित वर्ग के साथ और महिलाओं के साथ जब भी ये घिनौनी हरकत होती है कि उनको नीचा दिखाया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और फिर उनके साथ में हिंसा की घटनाएं होती है. और ये सब ठीक करने के लिए सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की बात नहीं है कि जो देश का कानून है वो अगर बना है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तुरंत जरूरत है. और हर तबके को, जो औरतें हैं, चाहे मर्द है, चाहे यूथ है, तो उन सबको उस पर अमल करना चाहिए. आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि डाउरी का कानून है, डाउरी लेना देना गलत माना जाता है. उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे डाउरी दिया जाता है. डाउरी की वजह से होने वाली डेथ बहुत बड़े पैमाने पे है और उसकी वजह से लड़की नहीं चाहिए, ये इट इज डॉटर अवर्शन होता है. सिर्फ सन प्रेफरेंस का मुद्दा नहीं बनता है, लड़की नहीं चाहिए, लड़की इज नॉट एसेट टू द फैमिली. तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें डाउरी के कानून को ठीक करना पड़ेगा. साथ साथ में जो पीसीपीएनडीटी की चर्चा होती है ऊपर से नीचे तक, यूथ लेवल तक, प्रेग्नेंट औरतों के लेवल तक, खास तौर पे जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स है इस देश के, आईएमए है, स्टेट मेडिकल काउंसिल है, इंडियन मेडिकल काउंसिल है, आईआरआई है, इन सब को कानून की पालना करने के लिए हमें मजबूर करना पड़ेगा. क्योंकि जब तक हम कुछ पॉलिसी नहीं बनाते हैं जो जेंडर फ्रेंडली हो, जब तक हम कानून देश का नहीं चलाते हैं, जब तक डंडा नहीं चलता है, तब तक औरतों को कभी इस देश में जस्टिस नहीं मिला है. इसलिए माइंडसेट तो जरूर चेंज करें, सालों साल करते रहना पड़ेगा, लेकिन तुरंत आज की तारीख में अगर लड़कियों को जन्म लेना है और बड़े पैमाने पे होने वाला गैंगरेप को रोकना है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को अपने जगह पे लाना है, तो हमें जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जुडिशियल ऑफिसर्स है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा. साथ साथ में युद्ध के साथ चलाना पड़ेगा. इस देश में तरीका यह है कि जो कानून खरीद सकता है वो बड़ा होता है, जो कानून पालता है उसको पागल समझा जाता है. लेकिन हम अमेरिका में देखते हैं, लंदन में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं कि रात की 12 बजे भी वहां का सिविलियन लाल बत्ती के सामने खड़ा होता है और कानून पालता है. और हमारे यूथ को लगता है कि हम लाल बत्ती तोड़कर अपना गाड़ी निकल जाए तो हम हीरो होते हैं. और हमारा हिंदी पिक्चर में भी हम इसी को दिखाते हैं, जो कानून में हिंसा करेगा, मारपीट करेगा, वो हमारा हीरो होता है. तो मुझे लगता है कि गांधी जी की तरह जो अहिंसा की बात करेगा, जो कानून पालने की बात करेगा, वो हमारा हीरो बनेगा. और इस मुद्दे को लेकर अगर हम चलते हैं तो औरतों के साथ में होने वाली नाइंसाफी, औरतों के साथ में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, इन सब मुद्दे पर हमारा यूथ को, खासतौर पे जब शादी करता है, जब शराब पीता है तो माँ बाप से नहीं पूछता है, लेकिन शादी करता है तो जात धर्म की बात करता है, और जिससे प्यार होता है उसको छोड़कर जात धर्म वाली लड़की से डाउरी लेकर बड़े पैमाने पे हम आपके है कौन से लेकर, हम देख रहे हैं हिंदी फिल्म भी वही दिखाता है. एक दिन का शादी का एक रस्म, एक सिग्नेचर से होने वाली एक शादी हम 5-5 दिन तक दिखाकर, पेज 3 का मुद्दा बनाकर हम मीडिया से लेकर हर जगह पे खर्चे होने वाले शादी, और वो खर्चा भी किसके जेब से, लड़की का बाप का जेब से. तो इसलिए हमें यह शर्मनाक बात बनानी पड़ेगी और हमें डाउरी से लेकर इक्वालिटी तक की हर चीज को एक कानूनन मुद्दा बनाकर कानून पालने के लिए, उसके लिए हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा. इसलिए सिर्फ माइंडसेट चेंज करके ये बात खत्म नहीं होगी. हमें कानून की पालना करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी बेचने वाले, टेक्नोलॉजी चलाने वाले, इन सबको
टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कानून की पालना करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड को या जो भी कंपनियां यहाँ कर सोनोग्राफी मशीन बेचती है वो खुलेआम इलीगल जगह पे बेच रही है, तो उनको भी हमें इस देश का कानून पालने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी। ये बहुत सारे जो इंटरकनेक्टेड इश्यूज जिनके बारे में आपने बात करी अभी, ये डाउरी से लेके पूरा जिसको हम एक पितृसत्ता या पेट्रियार्की के इश्यूज मानते हैं, सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप ऑल ऑफ दीज सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इश्यूज, फ्रॉम डाउरी, फ्रॉम द सेफ्टी एंड फ्रीडम अवेलेबल टू women, to access to education rights, assets that are all coming together actually to create this whole scenario of the declining child sex ratio. तो ये सब जो interconnected issues हैं उनको हमको एक interconnected तरह से ही देखकर सबको address करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। So, और बहुत अच्छे से जो आपने highlight किया कि mindset change तो हमको continuously उसकी एक कोशिश जारी रखनी है, but along with that addressing the law and ensuring that the law is implemented is very important. So thank you for bringing that in. I think Preeti ji has to move for another meeting, so she might leave now the hangout. Thank you very much, Preeti ji, for being part of the conversation till now and informing us, and we will try and take this forward. Aarti ji, I think, is being unable to connect with the audio. So Preeti ji, just before you leave, anything that you want to say? No, what I said was कि वर्षा जी ने जो बोला, I think there is nothing that we can say. She's very well put all the issues together. It is actually enforcement mindset, and that's what we need to do in the right earnest. I agree with her, and please join hands in our endeavor. Thank you. Okay, thank you, Preeti ji, for that message and for being part of this. To take it forward now, Aarti ji is being unable to connect with the audio, and I'm going to now take a little bit of time to just relate what she has said by typing it in, so the messages that she has sent, and she is talking largely about the issues of getting this information out and working from the mainstream media sector. And she's saying that in a daily selection of news, social sector news is the first to be removed. Even advertisements, come in and replace social sector news. So all of these issues that Varsha ji has outlined for us, जिन issues की आप बात कर रहे थे Varsha ji, वो सबको report करने में सबसे low priority issues वही रहते हैं. Advertising और बहुत सारे अलग जो issues होते हैं वो इसके ऊपर primacy पाते हैं mainstream media में. And the issue is also making people talk about the declining sex ratio, because all of the people, Aarti ji is saying that people actually fundamentally believe in son preference, and this is the biggest mindset challenge that we are facing. People will not talk about it, and even the government in most of the times is in a denial mode. So that leaves the media with just one non-government organization that they have to rely on and depend on to try and bring these issues into focus. It's politics and crime and terrorism that take up all the space. And when Aarti ji did the child marriage stories in Chhattisgarh, then the WCD minister threatened to complain against her story to her political bosses. And it was quite a difficult kind of scenario. It was very challenging to bring out these kinds of stories in the mainstream media, and that's what Aarti ji is saying from her experience of actually reporting it and trying to bring focus on these issues. So just continuing with what Aarti ji is saying, that there may have been various reasons for child marriages earlier, but there is no justification now after that landmark kind of raising of consciousness happened. There is no justification of it. कानून में भी वो नहीं है और mindset change में भी उसको हमने बहुत address किया है, लेकिन it is continuing as a practice. So जैसे वर्षा जी आप कह रहे थे कि there are lots of these different practices that we need to really look at in conjunction with each other. But to move ahead now, going back to Neelam ji, Neelam ji, आप continuously as a doctor also, you're wearing many hats and you're also in this whole arena as a doctor. और ये जो PCPNDT Act की बात हो रही है और technologies की जो बात कर रही थी प्रीति जी, there are these two things. So you could talk about that a little bit from your experience, and what is it that is urging the doctors to, or how to
to sort of address that issue of the doctors and the role that they play in the situation. Absolutely. Manak, if you look at what has happened in the medical profession over past few years, I would say not past few years, I would say 30 decades or 40 decades. Because ethics and moral, these are two things which are very much the guiding principle of any profession, and so is the medical profession. But if you look at what happened, past 30 years, the medical profession and that too the private sector in India, which is the most unregulated sector, I would say, if you compare. So nearly if you say the 65% of the health services are being provided by the private sector in India. And private sector, as we all know, that it looks into the profit. And ye profit and technology and its use and the lure of use technology. So if we look at the mindset of people, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कुछ परसेंटेज हो सकता है ल्योर ऑफ मनी इज द बिगेस्ट थिंग, एंड उसका अगर मैं आपको एक उदाहरण से सबको समझाना चाहूँ कि ये ल्योर कितना बड़ा है, कैसा है, एंड व्हाई देयर इज डिमांड फॉर दिस टेक्नोलॉजी, तो आप समझ सकते हैं कि इफ यू लुक एट द डोनेशंस फॉर एडमिशन इन द पीजी कोर्स फॉर डूइंग रेडियोलॉजी is somewhere between 2 to 4 crores right now in India, and that is the highest donation for any PG admission in medical science. So that tells us that how much money is this technology making, that people are ready to pay 2 to 4 crores to give to these medical colleges so that their son or daughter can take admission into this, because it makes money. So this is the dimension of the money. If you look at the use and ethics, so एक मोटा केस है कि जो इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट्स को किए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से ये इमेजिंग टेक्निक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड की, इनका कितना गैर जरूरी और अनएथिकल इस्तेमाल हो रहा है देश में, वो एक बड़ा मुद्दा है. और इसी से प्रमोट होके मेडिकल प्रोफेशनल्स के हाथ के बजाय ये पूरी टेक्नोलॉजी अभी क्वैक्स के हाथ में है. वर्षा और मैं और उसके अलावा और जो मेडिकल इसके जो इंस्पेक्शंस हम करते रहे देश भर में, हमने देखा है कैसे गैर तकनीकी लोग, नॉन डॉक्टर प्रोफेशनल्स, दे हैव बीन यूजिंग, इफ आई से हाई स्कूल पास लड़का, इंटर पास लड़की, कंप्यूटर ऑपरेटर, these are the kind of people who are running ultrasound machines now in the interior of the India. So the technology has become a machine to earn money. And this is something which is very worrisome, because if we use this technology, and this has all happened because initially this was a demand in the community, because we are patriarchal society and we were demanding for sons, and once we got a solution in the form of technology, we started using it. So it was demand led supply, because demand was already existing and supply is machine ka ho gaya. But if you look at now, once I say that the rural India has declined, it is supply-led demand. Of course, they had some preference, but there was no solution to it. It was left to God. But now, since this demand, this supply has gone to the rural areas, now the supply is forcing the demand to come. That look, we can give you what you want. And so this way, so what I see this entire phenomena is, it was initially the demand which led the supply, but now this is the supply, because the machines have gone far and wide into rural areas, and they are creating demand by luring the frontline workers in the country, giving them incentives by the investment. The people have done investment in machines. Now they have to get business, so that is how they are luring. So any other business in the country, the way you lure, the way you step forward, this business also is going, it has percolated down in our villages, and that is what is creating the havoc in the society. So it's purely because of money, it's purely because of unethical practice, and it's purely because we are not keeping, the professionals are not keeping with their moral. You say whatever, but I think this is behind the misuse of this technology. And this technology, if you look at, there are studies, Cochrane studies, which say that use of this technology has not made any significant impact on the perinatal outcomes in India, for that matter. So I think technology का बेजा इस्तेमाल, एक गलत इस्तेमाल जो है, वो कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है. और 30 साल में, जैसे अभी वर्षा ने कहा,
इतने 70 साल से कानून बना, हम नहीं कर पाए। 29 आई थिंक चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट केम, बट अभी भी इंडिया की अगर 40% पॉपुलेशन की शादियां 18 साल से नीचे हो रही हैं। वी हैव बीन ट्राइंग दीज 70 years for mindset change, but it has not happened. Similarly, I have a doubt that if we just go by the strategy of community mobilization, sensitizing them, and doing a lot of mindset change is very important, but I don't think we can really wait for mindset to change. We have to somewhere take control of this technology, which is going far and wide and being misused like left and right. So I think that is my concern, because we have seen, despite the authorities knowing that here the wrong is happening, they do not have courage to act upon these people, because these people are medical professionals and the people who are earning so much of money, and money gives a lot of power to them. So it's in fact a lot of power dynamics and money dynamics behind everything which is going on in the country. Thank you, Dr. Neelam, for bringing that very, very important insight into this conversation. और जैसे कि अभी आरती जी भी बोल रही हैं on the chat, I am sort of also talking about how the technologies are actually, this is an interesting continuously हम सोचते हैं कि ये रूरल एरिया की प्रॉब्लम है, या फिर ये कुछ पॉपुलेशंस की शायद इशू होगी, या कुछ जिनको एजुकेशन नहीं है, बट आप जो कह रही हैं उससे ये उल्टा एक फ्लो भी नजर आ रहा है कि एक्चुअली डिमांड स्टार्ट्स इन द अर्बन एरियाज, टेक्नोलॉजीज आर मोर अवेलेबल देयर, और वहां पे हम ज्यादा इसको देख रहे हैं, एंड फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी पॉपुलेट कर रही है रूरल एरियाज में, वहां पे भी एक डिमांड जो है उसको ये सर्विस कर रही है और एक्चुअली बढ़ा रही है। तो इट कांट बी क्लब्ड एज अ रूरल एरिया और एन अर्बन एरिया प्रॉब्लम। ये हर जगह हम लोग रैम्पेंट देख रहे हैं। साउथ दिल्ली में खास करके देखते हैं कि ये ज्यादा एफ्लुएंट एरियाज में हमको, और बुरे चाइल्ड सेक्स रेशियो इज मोर इम्बैलेंस्ड इन द मोर एफ्लुएंट एरियाज ऑफ सिटीज लाइक दिल्ली फॉर एग्जांपल। So that is a very important perspective to bring into this whole debate, because usually we club a lot of issues of violence and this kind of mindset to a certain poverty or a certain kind of uneducated mindset, but declining child sex ratio में actually ऐसा नहीं है। तो वर्षा जी, इसमें would you also like to add कि क्या इनिशिएटिव्स या किस तरह के एक्शंस जो आपने लोकल लेवल पे शायद देखे हो, जो some examples maybe of what has worked or what is working, what is being done now at the local levels? इसको नीलम जी जो कह रही थी, इसके और एक मुद्दे के बारे में मैं थोड़ा आप सबका ध्यान देने के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि खासतौर पे जिस यूथ के साथ हम अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और उनके लिए ये उनके लिए भारत बन रहा है, तो जेनेटिक का जो मुद्दा है, खासतौर पे जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है कि प्री कंसेप्शन लेवल पर भी सेक्स रेशियो का मतलब सेक्स चुनाव हो सकता है, और उसके जरिए जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, जेनेटिक काउंसलिंग लैब्स है, जेनेटिक काउंसलिंग टेक्नोलॉजी है, और जैसे डिजाइनर साड़ी खरीदने जाते हैं मॉल में, उसी तरीके से डिजाइनर बेबी खरीदने लोग जा रहे हैं। और खासतौर पर जो मेट्रोस है वहां पर ये अवेलेबल है। सिर्फ सोनोग्राफी का मुद्दा नहीं है, जेनेटिक के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से इतने दूर, करीबन 1500 किलोमीटर पर दूर बैठे आप सभी के साथ मैं यहाँ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, लेकिन इसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे टेक्नोलॉजी व्हेनेवर इट कम्स टू एनी नेशन और एनी स्टेट और एनी मैन और वुमेन, इट कम्स फॉर प्रॉफिट। इट इज अप टू यू टू यूज इट इन अ वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम के बारे में जो मैन शोविनिस्ट सिस्टम है उसकी बदलाव की बात है, क्योंकि डिजाइनर बेबी की तरह डिजाइन करते समय बेटी को डिजाइन नहीं किया, या किस तरह के आज अगर बेटी नहीं चाहिए ये मुद्दा यहाँ पर उठ के आता है, तो कल हो सकता है कि काला आदमी नहीं चाहिए बोलेगा, कल बोलेगा टेढ़ा नाक वाला नहीं चाहिए, ब्लैक हेयर नहीं चाहिए, व्हाइट हेयर चाहिए, या और कुछ हेयर का कलर चाहिए। तो इस तरीके से अगर इंसान का डिजाइनर बनाने पर हम तुले हो गए, टेक्नोलॉजी अच्छा है, जिनको बच्चा नहीं मिलता है उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक के जरिए बच्चा अपना पाने के लिए टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी को एक कानून के दायरे में रहना चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम के दायरे में रहना चाहिए, और खास तौर पर जिस यूथ के हाथ में हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उस यूथ को भी अपना वैल्यू सिस्टम, अपना जेंडर इक्वालिटी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीजों को समझना चाहिए, और फिर टेक्नोलॉजी को किस हद तक ले चले, कहां पर रुकने के लिए रखे, कब हमें
अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, किस दौर पर हमें अपना हाथ में आया रिमोट को यूज करना है, इसको भी तय करने के लिए एक क्षमता बनानी पड़ेगी। और इसलिए कानून तभी चलता है ना जब कोई क्राइम घटता है। क्राइम ही ना घटे तो मेडिकल एजुकेशन जो आज की तारीख में एक दुकानदारी बन चुका है, जिसके बारे में नीलम जी ने बहुत विस्तार से बात की, तो जितना भी अपने हम अभी महाराष्ट्र में जितना भी स्टिंग ऑपरेशन किया, और दोस हु कॉट एज एन मेडिकल पीपल breaching, violating PCPNDT Act, almost all of them, they come from a medical college which is not a merit college. Most of these colleges have been run by politicians who are running that kind of an this thing medical college, where you have to pay the money in a huge amount, or those who come and do it, they are from the affluent class. So the people who are joining as a doctor, they are breaching the ethics and laws, and this is the confidence which they are gaining because of they are organized. Their political system is like this. So it is with all those youth politicians who have changed the scenario of this nation, for the youth politicians and youth new voters also to have this issue as a political issue. अपने देश का ये छवि पूरा जगत के सामने आना कि ये औरत के लिए अनसेफ जगह है, वूम से लेकर टोम तक, और जीवन भर औरत यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकती, ये हमारी इमेज जगत के सामने आना हम सबके लिए बहुत ही घिनौनी बात है, क्योंकि ये मुद्दा जेनोसाइड का मुद्दा है। 6 लाख लड़कियां हम हर साल इस देश में गायब करते हैं, करीबन 40,000 से ज्यादा क्रिमिनल, मैं तो इनको मेडिकल टेररिस्ट बोलती हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मुझको साहब ने जिंदा लोगों को मारा तो वो तो बिल्कुल टेररिस्ट था, और हमने उसको कानून बताया और उसको हैंग टिल डेथ बोलकर जहां भेजना चाहिए था भेज दिया। लेकिन जो हमारी जेब से, हमारे टैक्स पेयर का जेब से यहाँ पर पूरा सिखाई होता है, पढ़ाई होता है, वो लोग अगर 6 लाख लड़कियां हमारी पॉपुलेशन से गायब कर रही है, तो ये बड़ा अटैक हो रहा है विमेन रेस के ऊपर, यूथ को, सभी स्टेक होल्डर्स को, खासतौर पर हमारे तरुण पुरुषों को, जो जवान लड़के हैं, उनको ये पुरुषार्थ दिखाना है, डाउरी नहीं लेंगे, किसी भी औरत के साथ एक इक्वालिटी के साथ पेश आएंगे। तेरी माँ की बोल के शुरू करते हैं, मतलब गाली से लेकर रेप तक, माँ की नाम से और बहन के नाम से गालियां देने बिना हम अपने आप को पुरुष साबित नहीं करते हैं। तो ये सब शब्दों से लेकर हर चीज में हमें बदलाव लाना है। थैंक यू वर्षा जी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए। जैसे आप कह रहे थे कि काफी सारे थ्रेड्स जो हम लोगों ने शुरू किए वो एक साथ आ रहे हैं। जैसे आप पहले भी कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बात कर रही थी, नीलम जी ने भी जैसे बोला कि व्हाट इज द चैलेंज दैट एन इंक्रीजिंगली कमर्शियल कल्चर is bringing before us in terms of commercialization of education, like you were saying right now, that commercial interests then take over how people are educated, and that kind of social function that especially a doctor's education is supposed to fulfill is left out of any priority within that kind of education. Aarti ji jaise bol rahi thi ki corporatization within the media then blocks issues like this from being highlighted in the mainstream media, because advertisements and other kinds of news, politics and crime and all of that take over the emphasis of the news channels and the media houses. So ये continuing strain हम लोग देख रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे इन इश्यूज के लिए, इन मुद्दों के लिए हर सेक्टर में, एजुकेशन में, मीडिया में और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इसके लिए स्पेस हम लोग कैसे बनाएं। तो दैट इज वेरी यूजफुल। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अभी आरती जी भी जैसे काफी वैलिड और रेलेवेंट पॉइंट्स बोल रही थी कि व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन दीज इश्यूज, देन वेयर डू वी नीड टू गो फ्रॉम हियर। एक हमको क्लियर आइडिया बना है कि मुद्दा है क्या और क्या उसका एक्सटेंट है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट, बट देन व्हाट इज द गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज गोइंग टू बी द next steps that we say? And Aarti ji was saying that things like the blood tests and kits are now ordered online for this purpose, and there is no law to stop this kind of process from happening. Technology is continuously putting all of this decision in the hands of the people, and so awareness among young people is perhaps the answer. This is what Aarti ji was saying, that it is difficult to change the older generations who have made those decisions, who have actually been in those decisions and have taken whatever
things they wanted to take up forward. But with the young generation, now they can become the role models for others in education institutions, in offices, even in social gatherings. Advertisements, she said, are helpful, but considered as propaganda by the government. Hence, they are not looked at very, very warmly, and they are not accepted so much. But this kind of peer education or peer dialogue among young people, especially young parents, is something that we should look at building very, very clearly as we go forward on this issue. नीलम जी, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें इस बारे में कि गोइंग फॉरवर्ड ऑन दिस इशू, अब वो क्या की मैसेजेस हैं दैट वी as civil society organizations, as people who are concerned about this issue, and even as the government, to inform this kind of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की तरह से लोग जो आंदोलन हो रहे हैं. तो नीलम जी, आपको क्या लगता है, what are those key messages that we need to send out, like 2 or 3 key messages that need to send out in a large way to everybody to be able to counter this problem? I think ये यूथ फोरम में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इन्वॉल्विंग यूथ इज द की, एज यू आल्सो सेड. सो यूथ, क्योंकि आगे चल के वही पेरेंट्स बनेंगे, तो उनको ये समझना है कि हमें कैसा देश चाहिए, हमें कैसा समाज चाहिए, कैसा परिवार चाहिए. सबसे पहले उनकी समझ बन जाए तो. लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हमें एक स्ट्रेटजी जो चाहिए वो ऐसी चाहिए जो बहुत बैलेंस करती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सामाजिक बदलाव की जरूरत भी महसूस होती है. लेकिन उसके पहले, क्योंकि हमारे पास और बहुत उदाहरण हैं जो सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जो कानून बने उसको बहुत हम लागू बहुत सीरियसली किया नहीं, और ना वो समस्या खत्म हुई. तो उसी मुझे लगता है कि दूसरे सामाजिक कानूनों से ये कानून फर्क है, क्योंकि ये कानून मुख्य रूप से इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए है. तो टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून होगा वो उसी के लिए लागू होगा जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी मैं देश में देखती हूँ तो करीब 50,000 के करीब रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं. तो उस तरह 50-60 हजार कुछ लोग हैं जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्या हम उतने लोगों को इस कानून के दायरे में नहीं ला सकते? क्या वो मुश्किल काम है? ये सवाल है सरकार से कि क्या हर इस इतने बड़े देश में 50,000 लोगों के लिए जो हमें व्यवहार परिवर्तन करना है कि वो मशीनों का इस्तेमाल ठीक से करें, सही काम के लिए करें, और ये कानून उनके ऊपर लागू रेगुलेशन का, क्या ये मुश्किल काम है? मुझे लगता नहीं कि ये मुश्किल काम होगा. बजाय इसके कि हम 1.2 बिलियन कुछ हमारी पॉपुलेशन है, उतनी पूरी पॉपुलेशन के माइंडसेट के ऊपर काम करें, उसके लिए बड़ी एनर्जी और बड़े समय की जरूरत होगी. लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मेरा मैसेज ये बिल्कुल नहीं है कि उनके साथ काम नहीं किया जाना चाहिए. लोगों के जो माइंडसेट परिवर्तन है उसमें काम करने की जरूरत है, लेकिन वो हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ये करना पड़ेगा. लेकिन शॉर्ट टर्म, अगर हमें 2021 के सेंसस की फिक्र है कि और कम ना हो जाए, तो अभी भी हमारे हाथ में करीब 6 साल है और हम काम कर सकते हैं. और इसके काफी हमारे देश में भी उदाहरण है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी, जो मुझे लगता है कि अगर हम ला सके इस 6 साल में, तो शायद हमारे लिए एक बहुत अच्छा 2021 में सेंसस होगा. अदरवाइज जिस तरह से अभी चल रहा है, हम लोग जा जाके देश के अन्य हिस्सों में देखते हैं जिस तरह कानून की पालना अभी हो रही है, उससे बहुत एक आशा की उम्मीद करना कि हो जाएगा. जब तक कि हम एक नहीं समझते हैं कि इसको करना जरूरी है, तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा. तो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन है हमारे हाथ में, और जो बहुत इमरजेंसी के रूप में है कि हमें करना ही होगा, और वो ये है कि हम कानून की पालना के लिए बहुत सख्ती से काम करें और इसको करें. और जहां तक समाज में वैल्यू ऑफ द गर्ल चाइल्ड की बात है, सेलिब्रेशन की बात है गर्ल चाइल्ड के अराउंड, और उस एम्पावरमेंट की बात है, वो हम जरूर करते रहें, क्योंकि उसकी आवश्यकता अंततः पड़ेगी. क्योंकि बहुत सारी सिर्फ ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एलिमिनेशन ही एक मुद्दा नहीं है. बहुत सारे जो केसेस अभी वर्षा ने कहे, बहुत तरह के जो और हिंसा होती है महिला के खिलाफ, सबको रोकने के लिए अंततः हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है, और उसमें हमें समय लगेगा. सो मुझे लगता है कि ये 2-3 काम ऐसे हैं, सरकारें ऐसे उसके साथ आ सकती हैं. आप जिनके सिर्फ बेटियां, उनके इनकम टैक्स रिलीफ दे सकते हैं, आप उनको रिजर्वेशन नौकरियों में दे सकते हैं, जिस तरह से लोग मोटिवेट हों. इस तरह की स्कीम्स आनी चाहिए, और बहुत कुछ आ भी रही है लड़कियों को एम्पावर करने के लिए. लेकिन ये बहुत लंबे समय में काम करने वाली रणनीति होगी, इसमें समय लगेगा. तो त्वरित रूप से जो काम करना है वो PCPNDT एक्ट, जो एक बहुत खूबसूरत कानून है, लेकिन उसकी पालना बहुत ढीली हो रही है, वो हमें करना ही होगा. थैंक यू नीलम जी इस कॉन्टेक्स्ट के लिए. जैसे आप कह रही हैं कि PCPNDT एक्ट जो है
बहुत सारे कानूनों का हमारे देश में यही एक मुद्दा रह जाता है कि वो बनते हैं और बहुत खूबसूरत कानून होते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बहुत कमी रह जाती है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ लॉज we continuously, in response to these incidents also, we've seen so many incidents around violence against women and safety and freedom for women, and we are continuously asking for stricter kanuns and stricter laws to be made without realizing that the laws are already actually quite good and well in place. It is the implementation where we need to really make a difference, make an impact there with a whole range of initiatives that we take forward going from here. uh, आरती जी अभी ये कह रही है कि वो ऐड करना चाह रही है कि द गवर्नमेंट शुड आल्सो फोकस ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन, which should enhance the respectability of girls, because violence is one of the reasons of child marriages and keeping girls out of school. So this whole context of violence and safety and freedom for women जो हम देखते हैं, डॉटर एवर्जन का एक ये भी बहुत hardcore, एक बहुत ही रियल कारण की तरह से हमारे सामने आ रहा है. So, and the onus of this, of course, is on mindset change initiatives, but also definitely on the government to take the onus of putting in structures in place that create equal and accessible spaces and opportunities for women and girls, particularly. So thank you. And as you were saying, जैसे वर्षा जी भी पहले बोल रही थी कि गर्ल्स काउंट जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जो एक कोलिशन है which is working on the issue of declining child sex ratio, the central message that Girls Count is spreading or sending forward is challenge patriarchy and stop sex selection, and to say that these are not disconnected things. It is about technology. It is about making that hardcore investment in ensuring that the laws are in place and that technology is checked in how it is being used, and also about addressing the whole range of issues that come with patriarchy and keep women from being empowered and being able to access rights and opportunities in their lives. So those are the twin key messages that we would really like to send out to everybody who's watching this hangout. With that, I think we're also nearing the end of the hangout. So any key messages, Varsha ji, Anilam ji, anything else that you would like to contribute, or we can move towards a closure? I think we are hopeful because as girls count, it's very important that we need to really count and bank upon. And I think we are hopeful that initiatives and discussions like this will enrich the youth, and they will, once they engage into it, and I think they have a whole influence in the family, in the society, and the years to come. So I think we really have a hope that, and that's how the youth, which is, I think if I just say that 65% of the population of India is younger than 35 years. So I think the energy we can tap into Girls Count endeavor also, and I wish good luck to Girls Count for this initiative, and we all have a hope that we have a way forward somewhere, and we will be able to come out of this situation where we are right now. So with that, I'd like to thank you. I think Varsha ji ka connection abhi disconnect ho gaya hai. So thank you very much for making time for this conversation, and really want to acknowledge the efforts made by Youth Ki Awaaz to be one of those voices which is taking up all of these issues that get left out in the mainstream media, and particularly bringing them to young people. And as Girls Count, we are really happy to collaborate with Youth Ki Awaaz, and really happy to engage with experts like you and be able to actually send out these messages and these insights to everybody who will be able to watch them now online. So thank you very much. Thank you, Neelam ji. Thank you, Aarti ji, for being part of this conversation. Okay, thank you, ma'am. Thanks.